Sorry guys, we were just disconnected. नेटवर्क हमारा वाईफाई डाउन हो गया था. बट बैक टू द क्वेश्चन यार, कहाँ पे गया हमारा. तो वी वर आस्किंग टू द Gemini about the question. What is the question basically? Imagine you have two separate decks of numbered cards. The goal is to pick exactly k cards from both the decks. Imagine you have two separate decks of numbered cards. Your goal is to pick exactly k cards from the both the decks combined to form the largest possible number. अभी इसको इतना नंबर ज़्यादा क्यों लग रहा है मेरे को. मेरे भाई का है क्या ये? Imagine you have two separate decks of numbered cards. Your goal is to pick exactly k cards from both the decks combined to form the largest possible numbers. There is one major catch: you cannot change the order of the cards within their own deck. If a 9 comes after a 2, you cannot solve them. You have to take the two first if you want both. To solve this, we bring down this into simple words. Pick the best sub teams. First, we decide how many cards to take from deck A and how many from deck B. For example, if K equals to 5, we could take 2 from deck A and 3 from deck B, or 1 from deck A, 4, all 5 from deck A, and 0 from deck B. For each deck, we use a greedy approach like the cookie problem to pick the largest possible digits while keeping them in their original order. Cookie problem अगर आप लोग को पता होगा तो better है. Merge them together. Once we have two sub teams, we need to shuffle them together to make the biggest number possible. We compare the front of both lists. If one number is bigger, we take it first. The trick: if the front numbers are the same, और हम लोग रिवर्स सॉर्ट कर देते हैं ना उसमें. The trick: if the front numbers are the same. Example: both are 7. We look at the next number in the text to see which path leads to bigger number overall. If the front numbers are the same, example both are 7, we look at the next number in the text to see which path leads to a bigger number overall. Find the great champion. We repeat steps 1 and 2 for every possible combination. 2, 3. Each combination gives you is. Why this is tricky, yaar? Explain. That's it properly. I hear you. This following. Imagine you have two conveyor belts with number boxes on them. You need to pick exactly four boxes to create the biggest four-digit number possible. All right. So the goal is to actually make the very big digit, the largest possible digit. For example, if k goes to 5, we have to make the largest possible digit out of this 5 digits. All right. So that's what the aim is. And belt A is 675 and belt B is 481. Goal: pick four boxes. Total k equals to 4. All right. The golden rule: you can skip a box, but you cannot reach backward. If you take the 7 from belt A, the 6 is gone forever. Okay, divide the work. Since we need four boxes total, we have to decide how many to take from each belt. We try every combinations from option A. One from box A, belt A, three from belt B. Two, two, three, one. Step pick the best from each belt. Let's look at option two from A. From A, 8 and 1. The merge battle. Now we have 7, 5, 8, 1. We want to combine them to make the biggest number. We look at the front of the box. If is 7 bigger than 8? No. So we take 8 first. Now we compare 7 and 1. 7 is bigger, then we take 7. We take 7. Now we can compare 5 and 1. 5 is bigger than 2. We finally make the list. 8, 5, 7, 5. Compare all options. We do for that for all the options from start. As we know that greedy approach मतलब वो हर एक चीज़ों को
डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ हर एक पॉसिबल, बट डीबी वही करता है ना। ग्रीडी तो उल्टा हमारा कंस्ट्रेंट लेके हम लोग मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की तरफ जाके हम लोग को एक कंस्ट्रेंट मिलता है, तो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एक ग्रीडी अप्रोच चालू करते हैं। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आई थिंक सो वी आई थिंक सो क्या मतलब, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम लोग हर एक पॉसिबिलिटी जो भी रहती है वी चेक दैट ऑलराइट। सो मेरे हिसाब से डायनेमिक वुड बी अ बेटर ऑप्शन हियर, डीबी इज बेटर applicable in this problem. बट ठीक है, ग्रेडी अप्रोच ही है। सो हम लोग को हर एक ऑप्शंस में जाके हम लोग को उसका फाइंड बिगेस्ट इंटीजर मतलब ओवरऑल डेटा हम लोग को क्रिएट करना है बाय जस्ट मूविंग। इफ देयर इज एक्चुअली फाइव, देयर विल बी अ फाइव, देयर विल बी अ होल लॉट पॉसिबिलिटीज यार। मतलब आप एक लो, चार लो, पांच ही लोग, तो देयर विल बी अ मल्टीपल ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग k इक्वल्स टू 4 है, तो देयर वुड बी एब्सोल्युटली समथिंग कि भाई k इक्वल्स टू 5 है, तो हाउ मच पॉसिबिलिटी दैट वी कैन जनरेट। एक सेकेंड, how many possibility we can generate, एक सेकेंड तो how much possibility we can generate, एक दो तीन चार पाँच, तो वन फोर, फिर फोर वन फाइव ज़ीरो फाइव टू थ्री थ्री टू, सो तीन तीन छः, k इक्वल्स टू 3 है तो टू वन वन टू, k इक्वल्स टू 4 है तो मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है मेरे को कि अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने क्वेश्चन टेस्ट केस क्या दिया, 3406 नम्स 3 4 6 और ये 5। दूसरा क्या दिया, 9 1 2 5 8 3। अब ये बॉक्सेस क्रिएट, लेट मी जस्ट डू इट, I'll create a box for this। तो ये हमारा नम्स 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। इंडेक्सिंग दे देते हैं वगैरह, 0 1 3 4 5, के इक्वल्स टू कितना है, this is the most important part, alright। k equals to 5, k equals to 5, there will be a 7 possibilities। कितने possibilities, 6 possibilities, 6 options। पहला गया 1 4 4 1 2 3 3 2 0 5
5 0. So there is actually a six possibilities here. Alright, six possibilities बन रही है यहाँ पर. अब मेरा ये है मानना, अभी जैसे कि हम लोग को 4 को लेना है, सो 3 वुड बी रिमूव. नहीं ले सकते हम लोग, वी कैन नॉट टेक इट. ऑलराइट, पहले तो हर एक अप्रोच पे हम लोग को जाना पड़ेगा. तो हम लोग को एक रिकर्जन लिखना चाहिए क्या? Recursion, using recursion possible. एक सेकंड, लेट मी जस्ट आंसर. Just a small hint, we should take it. Yeah. 10 मिनट ऑलरेडी लगा चुके हैं. 5 मिनट में. एक सेकंड यार, टाइम को रीसेट करो. 20 मिनट नहीं आ रही है. वुड जस्ट नॉट अ सिंगल. स्टॉप वॉच ही करेंगे हम लोग. तो बेसिकली if you want to use recursion, think of it as a decision tree. At every step, you are standing in front of two conveyors value, two arrays, and you have to make a choice. The recursive choice. For each step, you ask which number should be the next digit in my k length result. Look at the options. Now you can pick any number from nums 1 or nums 2. But you must leave enough numbers behind to still finish your k length result. So I think so. मेरे हिसाब से ना approach should be what. Alright, let me just tell you what would be. मेरे को एक approach मिल गया है वैसे कि अभी जैसे कि for example, alright, हम लोग एक पॉइंटर लिए. There is 5k equals to 5 1 2 3 4. कैसा बना रहा हूँ यार मैं? 3 4 और ये 5. Alright, अब हम लोग क्या करेंगे देखो. 3 4. सॉर्ट भी नहीं कर सकता ना मैं. सॉर्ट कर लेगा तब तो वही बेस्ट ही है. तब तो वो मिल ही गया आंसर मेरे को. और सॉर्टिंग वी कैन नॉट परफॉर्म सॉर्ट बिकॉज ऑर्डर प्रिजर्व करना पड़ेगा हम लोग को. और 9 is bigger. Then we'll move to the next one. Then 4 and 1. 4 is bigger. Then again we move to the next one. And then सोच रहा किस तरीके से लगेगा ये. पहला थॉट में ये सोच रहा था कि इन दोनों में कंपेयर करके बिगेस्ट जो भी रहेगा, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब रिकर्सिव भी इतने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं. फिर वही बात है.
For each step, look at the options. You can pick any number from nums 1 or nums 2, but you must leave enough numbers behind to still finish your KLN result. Find the best. Scan the level up small for the code. Yeah. One second, yeah. I'm just coming here. I should just voice, yeah. One second, one second. Just going for the wash. Yes, back to the stream now. Yeah. Because if you look at the options, you can pick any number from nums 1 or nums 2, but you must leave enough numbers behind it to still find the best. Scan the available range in both arrays, because if once you pick the largest measure, slice the array at that position, you can't go back and repeat the process to find the next k-line. To make this work in a C++, your recursive functions will need to be kept track of ji, current starting index in I, nums j, rem, how many more digits you still need to do. वे भाई ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम नहीं लग रहा क्या आपको? थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम टफ है क्या? आया 3 4 6 5 9 1 2 5 8 3 k equals to 5 options. K equals to 5. Now एक सेकेंड में अपना सिर्फ वीडियो बंद करके रखा हूँ, तो आप उतना एडजस्ट कर लेना. तो 3 4 6 5 9 1 8 9 1 2 5 8 3. ऑलराइट, नाउ मतलब हम लोग को ऐसा है कि ऑप्शंस, तो देयर इज एब्सोल्युटली 6 ऑप्शंस.
Let me revise what is greedy, yaar. Let me just revise it from the note from my notes, yeah. Let me have to revise it, yeah. Greedy method, MST, Spanning Chini, Dijkstra's, he defined the minimum number of vertices. Um, Di will hold the shortest distance from source S to I. Integer division selected I will be true if vertex I is included in shortest path tree. रुको यार अभी एक इजी लेवल का क्वेश्चन मीडियम लेवल का क्वेश्चन करेंगे पहले तो मेरे से ये हो नहीं रहा है नेक्स्ट परम्यूटेशन कौन सा क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट परम्यूटेशन ये तो ठीक है पार्टीशन लिस्ट लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है क्या ये लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है बट अरे हाँ पार्टीशन लिस्ट में मैं अभी ट्राई कर सकता हूँ फिर भी बट यही है कि ये भी थोड़ा सा मैंने ट्राई ऑलरेडी कर चुका है ये सब लिंक लिस्ट साइकिल 2 शॉर्ट लिस्ट देखते हैं हाँ ये कर सकते हैं ये कर सकते क्या ये करना भी चाहिए मैं अभी लिंक लिस्ट का थोड़ा सा पर ठीक है 2 pointers अप्रोच काम इधर भी आ ही रहा है given the head of a linked list return the list after sorting it in an ascending order 4 2 1 3 1 2 3 4 so we have to make sure that it is sorted on मतलब sort करना है basically तो पहले तो ये प्रॉब्लम को हटाओ यार ये प्रॉब्लम को हटाते ही अभी ये भी ये करना है कि हम लोग को लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है ना तो 4 2 1 और ये 3 अब लिंक लिस्ट में वही है कि आप चेन जब तोड़ते हो तो चेन टूट ही जाता है मम्मी अभी ये कर लूँ मैं आप भी नहीं आओगी ना हाँ ठीक है चलो थैंक यू तो क्वेश्चन नहीं यार कहाँ पे गया मेरा हाँ तो 4 2 1 3 अब इसमें हम लोग को सॉर्ट करना है इसको और कैन बी यूज एक्स्ट्रा मेमोरी का कुछ कॉन्सेप्ट बोला नहीं गया है तो मेरे हिसाब से ना व्हाट शुड वी डू इज दैट 2 pointers हम लोग को लेना ही पड़ेगा अभी जैसे फर्स्टली हम लोग को फॉर एवरी आइटरेशन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द लिंक लिस्ट एंड मतलब सबसे लिंक लिस्ट हमारे नोड में सब जो भी पूरे लिंक लिस्ट में जो हमारे जो भी नोड में मैक्सिमम वैल्यू रहेगी दैट वो हैव टू और इंसर्ट एट हेड हम लोग यूज़ करेंगे मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट हम लोग का इंसर्ट एट हेड यूज़ होगा इंसर्ट एट हेड यूज़ करने वाले हम लोग बेसिकली एक सेपरेट एरे बना के इंसर्ट एट हेड इस तरीके से हम लोग न्यू नोड क्रिएट करने वाले हैं इंसर्ट एट टेल भी होता है बट हम लोग इंसर्ट एट हेड ही करेंगे नहीं इंसर्ट एट टेल करना पड़ेगा सॉरी क्योंकि हम लोग तो पीछे डालेंगे ना इंसर्ट एट टेल करेंगे यस राइट मतलब वो भी यूज़ कर सकते हैं बट वही है कि अरे यार नहीं एक सेकंड रुको इंसर्ट एट टेल ही करना बेटर है नहीं यार एक मिनट रुको तो रिवर्स लिंक लिस्ट करना इजी है क्या नहीं वो भी मुश्किल ही है तो इंसर्ट एट हेड ही करूँगा मेरे साथ इंसर्ट एट टेल ही बेटर है हाँ इंसर्ट एट टेल ही बेटर है तो मतलब हम लोग को पहले तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑलराइट बिफोर अभी पहले क्या करेंगे हम लोग वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू टेम्प हम लोग को पॉइंट करेंगे इधर हमारा टेम्प पॉइंट करेगा टेम्प हाँ टेम्प हमारा इधर पॉइंट किया अब ये टेम्प पॉइंट करने के साथ ही साथ अब ये टेम्प में जो वैल्यू रहेगी दैट वुड बी इंटीजर मिनिमम रहेगी इसमें वैल्यू
सॉरी इंटीजर मैक्स रहेगी वैल्यू। इंटीजर मैक्स इसमें वैल्यू रहेगी, दिस वुड बी द वैल्यू, वैल्यू रहेगी। अब इसको हम लोग आइटरेट करेंगे। फिर ये आइटरेट में क्या होगा कि जैसे इंटीजर मैक्स वैल्यू बड़ी आई छोटी आई तो 4 स्टोर किया इसने अपने इसमें, ओवरराइट कर दिया। हाँ, अब नेक्स्ट पे जाएगा वो, नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट लिस्ट पे जाएगा, 2 मिला, 2 और छोटी आई, डाल दिया वैल्यू, इंसर्ट वैल्यू, इंसर्ट, एंड ऑफ द लिंक लिस्ट जैसे पहुंचेंगे हम लोग, फिर 1 पे पहुंचे, 1 पे जैसे ही पहुंचे हम लोग को मिल जाएगा अपना 1 हमारा एक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग इसको रिमूव करेंगे। अब जैसे ये इधर पॉइंट किया टेम्प हमारा, तो हमारा जो प्रीवियस रहेगा, प्रीवियस पॉइंटर should point at this position, at this previous, एंड इसको हम लोग को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो नाउ इट विल बी अराउंड 4 2 3 4 3। अब इसमें क्या होगा कि टेम्प वापस से जाएगा, टेम्प इस पोजीशन पे पहुंचेगा, प्रीवियस हमारा इस पे पहुंचेगा, पी और टी करके ही कर रहा हूँ मैं। फिर वही है, इसको इसके साथ बनाना पड़ेगा, या बनाना पड़ेगा और इसको रिमूव, और इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अब नाउ इन द नेक्स्ट वन क्या होगा कि 4 और 3 बचा। अब इस टाइम पे क्या होगा ना, हमारा जब रेफ टेम्प और हमारा प्रेफ इधर मूव करेगा, हम लोग को ऐसा कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि टेम्प का जो नल है, अगर वो नल फाइंड आउट किया तो हम लोग को नल मिला, तो हम लोग को प्रेफ को, या प्रेफ का जो नेक्स्ट रहेगा हम लोग को उसको नल कर देना चाहिए। प्रेफ का जो नेक्स्ट रहेगा उसको नल कर देंगे। जो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट हो ही गया फिर, क्योंकि हमारा लास्ट जो है पहले में वो 3 बज गया। तो वही है, जब अगर टेम्प हमारा टेम्प का जो नेक्स्ट है दैट इफ इट इज़ नल, इफ इट इज़ नल देन हम लोग यही करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे इंसर्टेड टेल करके 3, फिर उसके बाद 4। ठीक है, तो समझ गया कॉन्सेप्ट। पहले तो एक फंक्शन है, रुक एक सेकेंड, इंसर्टेड टेल का मेरे पास फंक्शन है तो वही यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। नहीं, फंक्शन क्या यूज़ कर रहा हूँ, इसे अच्छा लॉजिक ही लिख दूंगा उधर में। slot list में, so list node and equals to, टाइम में वैल्यू कैसे डालते थे यार, इंटीजर मैक्स, नेक्स्ट नहीं, हेड पे पॉइंट करेगा ना ये, नहीं हेड पे ही पॉइंट करेगा।
इसको गैरे में स्टोर कर लोगे यार इस अच्छा। मिनिमम वैल्यू मिला ना हम लोग को, फिर उसके बाद क्या करना है ना हम लोग को, जो प्रेफ का जो नेक्स्ट रहेगा, एंड प्रेफ को भी बढ़ाना है ना। प्रेफ इक्वल्स टू प्रेफ नेक्स्ट, नहीं पहले प्रेफ को ही बढ़ाना है फिर टेम को बढ़ाना है। टेम इक्वल्स टू टेम नेक्स्ट। अब ये जो वैल्यू मिली, अब इसको हम लोग नया नोड बना के कंप्लीट कर देंगे।
नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा बीटी है। This is absolutely not a nice approach here. तो इस पर लॉजिक देखो क्या बन के आ रहा है। 4 2 और 1। 10 पे यहाँ पे पॉइंट करता था, ये प्रेफ था, सॉरी। ये प्रेफ है मेरा, और ये 10 हो गया। अब 10 equals to 10 prev next, and prev will be at this same position. ठीक है, तो बेस कंडीशन मत डालने दिया करो भाई, ये लोग बेस कंडीशन डाल देते हैं।
वो हो जाता है भाई, डू स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स नहीं यार, विथ माय अप्रोच। नोड डमी नेक्स्ट। सेव करो हम लोग, क्रेप का जो नेक्स्ट रहेगा दैट शुड बी द नेक्स्ट, एंड करेंट का जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज द नेक्स्ट। ये लॉजिक क्या बोल रहा है, मतलब अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कितना टाइम हुआ यार, 41। तो जैसे कि क्या लॉजिक दे रहा है कि लिस्ट नोड करंट हमारा पहले डमी डमी पे क्या कर रहे हैं ये? ऐसे होगी पढ़ाई? दिन भर ड्राइंग खोल के बैठा रहता है, ऐसे होगी पढ़ाई? 4213 current value, current is pointing at this position and we have created a prep current में the next है that is less than 4। alright, इसको हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने स्टोर कर दिया एक जगह पे, तो इसको हम लोग ने स्टोर किया, स्टोर the logic comes, the logic is prep for the next है, the next है that should be pointing at this, प्रेप हो गया, ये इधर पॉइंट करेगा डायरेक्ट, अभी करंट का नेक्स्ट किधर पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा, एंड जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है, नेक्स्ट का नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा ये हो गया, it should point at the current and the current is pointing currently now at 4 now। दम करेगा। तो मतलब 2 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, फिर दिस इज आवर नेक्स्ट एंड दिस इज आवर 1। ओके, सो लॉजिक समझ गया मैं मोस्टली, ये हमारा हो गया प्रेप एंड नेक्स्ट भी यही हुआ हमारा, और फिर उसके बाद हमारे जो
करंट है ये हो गया। भाई सब ट्रू हो जाएगा तो क्या हुआ भाई? हेलो, बोलना दिखता है। ओह, भाई मैं नहीं आ रहा, मेरा वो मैं मामा के घर जा रहा था और एक दोस्त भी आ रहा है मिलने मेरे को। हाँ यार, तो यार तुम लोग एंजॉय करो, मिलता हूँ वापस आके तो मिलता हूँ। कॉन्वोकेशन का डेट ही नहीं फाइनल है। अगर होगा तो पक्का होगा, मैं ट्राई करूंगा पूरा आने का, अगर छुट्टी मिलेगी तो आ जाएगा यार। ठीक है, चिंता ज्यादा है। मैं तो देख देख के शीशा सर माझी फिर तू मैं तो देख के शीशा सर। मम्मी सो आपका लॉजिक समझ में तो आ गया मोस्टली मेरे को। फिर प्रेप वो प्रेप नेक्स्ट करना पड़ेगा 4 पे 1 पे, क्योंकि करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी जब प्रेप टू अभी जैसे हमारे इसमें तो करंट इधर है तो हम लोग को प्रेप को इधर मूव करना ही पड़ेगा और एट द सेम टाइम प्लस करंट को भी मूव करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को अभी वो टारगेट थे 3, फिर इन दोनों में स्वैप करेंगे फिर इधर भी हमारा ये प्रेप ठीक है। ऑलराइट, सो वी हैव समहाउ अंडरस्टूड दिस नाउ। बात करते हैं। बट मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है अभी अभी जैसे ये तो हो गया। हम्म not a nice approach, yeah, not a nice approach at all। टाइम लिमिट भाई बहुत ज़्यादा लग ही जाएगा, तो ठीक है बट स्टिल वी जस्ट शॉर्ट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट टाइम लिमिट।
Hmm. Given an array of integers nums containing n plus 1 integers where each integer is in range 1 and inclusive, there is only one repeated number in nums. Returns this repeated number. You must solve the problem without modifying the array's nums and using only constant extra space. 13422. अरे यार ठीक है ये इजी हो गया भाई फिर भी मेरा स्टार्ट इक्वल्स टू एंड सॉर्ट करने की ज़रूरत है स्टार्ट इक्वल्स टू start equals to 1 and integer n equal sorry क्या हो गया भाई इधर कंपाइलर एरर क्यों आ रहा है I'm just irritated at this point यार because पीछे वाले को हट मेरे को ये भाई ये इतना हार्ड प्रॉब्लम है क्या भाई क्या है क्वेश्चन यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द array nums सॉर्ट परफॉर्म कर नहीं सकते
Mm.
कैमरे में कैमरे में हाँ एक सेकंड। देखो मैंने ऐप भी दिखा दी इसको बंद है अरे यार ये टाइम लिमिट क्यों हो रहा है एक्चुअली? टाइम लिमिट एक्चुअली हो गया। इधर भी आया डिस्कशंस देखते हैं यार, डिस्कशंस में मिल जाएंगे हम लोग को। कैमरा बंद है हाँ बंद है। प्लीज मम्मी 2 मिनट भाई यार कमेंट्स में तो सब लोग वो हो गए भाई कि ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी निकल गया लग रहा है। ठीक है यार, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे हिसाब से। आज इसके लिए खत्म करते हैं स्ट्रीम अभी। अच्छा था दिन। वी अटेम्प्टेड, हार्ड क्वेश्चन हो नहीं पाया, we solved it, but that's completely fair.